So hello everyone, today I am solving difficulty level 1400 code forces problems. So like पहले तो मैं प्रॉब्लम पढ़ूंगा, फिर उसके बाद वाइट बोर्ड पे उसका सॉल्यूशन समझाऊंगा, उसके बाद मैं कोड करूंगा. If you think like you can do your code by yourself without understanding, without looking my solution, so please do that, pause the video and after continue, like see the code if it is good or not, or which way is good, mine or yours. So have a look. All the like problem links are in the description, please have a look. Okay, this is the first problem. So you have a square chessboard of hand, cross and rows are numbered from top to bottom, from 1 to 9, from left to right, with number from 1 to 9, so that each cell having a pair of x comma y, where x is a row number and y is a column number. So like we have to perform three type of queries. So first is we have to put a row on cell x comma y, remove the rook from a cell x comma y, check if there was subtracting from x y. Okay. So what we given is like we have a grid. Okay, so it will be some, let's say 5 cross 5, 3 4 and it is 5. Here we go. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 comma 6 is correct. Okay, so type 1 and type 2 queries are very simple. So we have to put the row and get out the take out the row. That's simple. लाइक बट द थर्ड क्वेरी, तो थर्ड क्वेरी क्या करना है कि हमें कोई एक ग्रिड दे रखा है, x1 y1 x1 y1 से x2 y2 से मुझे कोई ग्रिड बनाना है और फिर उसमें चेक करना है कि सारी सेल अटैक हो सकती हैं नहीं. लाइक मैं इसको नंबरिंग टू 1 2 3 4 5 6, सेम हेयर 1 2 3 4 5 6. ओके, तो मैं कहूँगा मेरा जो ग्रिड है वो 3 से 5 तक है एक्स में और 3 से 5 सिमिलरली वाई में. ओके, सो सारी कब हो सकती हैं, या तो इन तीनों रोज में रूफ हो, या तीनों सॉरी तीनों कॉलम्स में रूफ हो, या तीनों रोज में रूफ हो. अगर तीनों कॉलम में या तीनों में रूफ है तभी अटैक हो सकती है, नहीं तो अटैक नहीं हो सकती, मतलब तभी सारी सेल अटैक हो सकती हैं. अगर इफ़ यू से लाइक इसमें इसमें है, लाइक इसमें दो में है और इसमें भी दो में है तो भी नहीं हो सकती. ओके, सो सारी इसमें होनी चाहिए, या सेकंड, या लाइक दोनों में से, दोनों रो और कॉलम में से एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए. ओके, लाइक मैं ब्रूट फोर्स से करूँ तो मैं सब रो में या सब कॉलम में चेक करूँ तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी पर क्वेरी ऑफ एन, and for q queries it will be q log of n, so it can't pass the test cases, so it will give to LD. ओके, सो लाइक अब मैं चेक करूँ कि मुझे ये, तो फिर मैं टेस्ट के कब पास हो सकते हैं, या तो ऑफ 1 में आए या ऑफ log ऑफ n में आए मेरे पास रिजल्ट. मुझे क्या चेक करना है कि अगर मुझे x1 दे रखा है 3,5, अब x और y इंडिपेंडेंट है टाइप ऑफ, ये मुझे x1 दे रखा है 3,5, एक्स रेंज दे रखी है 3 से 5 और वाई रेंज दे रखी है 3 to 5. मुझे चेक करना है इसके बीच में कोई ऐसी वो है, कोई ऐसी रो है जिसमें, कॉलम है या रो है जिसमें रुक नहीं है. अगर रुक नहीं है उसमें तो वो अटैक नहीं हो सकता, पूरे ग्रिड को अटैक, पूरे रेक्टेंगल को अटैक नहीं कर सकते. सेम इसमें भी चेक करना है कि इसमें रोज में 3 से 5 में कोई ऐसा है रो जिसमें रुक नहीं है. अगर रुक नहीं है तो आंसर नो आएगा. अगर इन दोनों में से एक में भी है तो आंसर यस आ जाएगा. तो बस यही करना है. तो फिर मैं करता हूँ, मैं सेट बनाता हूँ. ठीक है, दो सेट बनाता हूँ, एक रो का एक कॉलम का. अब मैं सेट में स्टोर क्या करूँगा, अब सेट में स्टोर करूँगा जो कॉलम या रो फ्री है जिसमें एक भी ये नहीं है, एक भी रूफ नहीं है. ओके, रूफ नहीं है. तो फिर मैं ठीक है, अब मैं जैसे कि अब जैसे कि इसमें रो में से देखो, मैं मुझे रो में चेक करना है 3 to 5, तो मैं रो में लोअर बाउंड निकालूंगा 3 की. अगर वो 5 से अगर छोटी आई, 5 से छोटी आई मतलब
5 से मतलब 4 आई मान लो, इसका मतलब ये है कि फोर्थ वाली रो में रो नहीं है, तो फिर ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली सेम केस फॉर मैं इसके लिए कॉलम के लिए करूँगा, अगर वो उससे बड़ी आई, 5 से बड़ी आई, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 से 5 तक हर एक रो में रूक है। बस यही चेक करना है। और हमें साथ में, अब देखो, अब यहाँ भी आ गया, या अब साथ में हमें एक काउंट और रखना पड़ेगा, एक अरे और बनाना पड़ेगा जो काउंट रखे कि इतनी इस सेल में, मतलब यहाँ और यहाँ पे मतलब कितने वो हैं, टोटल नंबर ऑफ रो कितने, इसमें 2 हैं, फिर इसमें जीरो टाइप ऑफ, मुझे एक अरे और बनाना पड़ेगा रो और कॉलम वाइज दोनों का। तो मतलब कि वो काउंट रखे कि इस रो में कितने वो हैं, ये रूक हैं, और इस कॉलम में कितने रूक हैं अगर। ठीक है, तो मतलब क्योंकि इंसर्ट करते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेट तो हमेशा वन ही रखता है, सेट में अगर सेम वैल्यू कितनी बार भी इंसर्ट करो तो वो वन रखता है, तो इंसर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अगर निकालना होगा तो फिर उसका काउंट पता होना चाहिए कि वो उसमें उस रो में जीरो है या नहीं, तभी उस रो को निकालेंगे, नहीं तो उस रो को नहीं निकालेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका कोड देखते हैं। अगर अब भी ये लगता है किसी को कि तुम कर सकते हो कोड, तो कोड खुद से करो। ओके, देन आई हैव टू लुक माई कोड। ओके, ओह या, सो वी हैव n comma k, then first I will create a set of typing, I will say row code, okay, and a vector for row a, row code, okay, of size will be n plus 1. Similarly, column also size n plus 1 is, it is a n cross n grid. Now I will, from I is equal to 1 to n, initially any of the row or column don't have any rook, so I will insert that all are free, any of these don't have any rook. Okay, now what I want to do, I will take all the queries will be pure queries, so I will take the type. What is the type of the current queries? If type is equal to 1, I will say okay, if can be 2, okay, or else they, we don't need to write like it is 3. Yeah, it is. Now we have given a point x comma y, and we have to insert x comma y. So on x row, one row is increased, on y column one row is increased. So if it is increased, then we have to erase, because row and column contain the rows or columns which don't have rook. Okay, now these x and y have root, so we have to erase. So row dot erase x and col dot erase y. Similarly, in this second, we also given way, yeah, cool. So we have to decrease, like these row are taken out. Now we have to check, like row of x is equal to 0. Now no row in this row, then take it out, then we have to insert. Okay, don't be confused, because I'm storing the rows which don't have row. Okay, then same for the column. If y is equal to 0, then it take it out. Insert this, like this column don't have row. Okay, now we are just given x1 y1, what is that, x1 y1 x2 y2. Okay, x1 y1 x2 y2. Now I will take c x1 y1 x2 y2. Okay, so मैं कह रहा हूँ minimum column, minimum row which don't have it will be n plus 2.
just for sake of simplicity that it will don't give me error, because in some cases it will not any of, there are no row which have in the set there is no row, then for that cases I do it. Okay, now I check if I have to find what row, row dot lower point, lower lower bound, lower bound of x1. What is the just next to the x1 is, if it is not equal to row dot end, like if there is anything present just greater than x1, then please that will be row dot lower bound of x1. If sometimes it will be not be present, so for that reason I will take it. Okay, same condition for what is column square. Here we go, but the things change. Here is y1 and here is y. So if any of the row having the complete like all the like L of x is greater than x2, means that this rows having all the roots from x1 to x2, all the roots are there present, or ly is greater than y2, same y, then I will say yes, it can be possible. Otherwise I will say no, it can't be possible. Okay, yeah. So I have already done this problem. No, 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 no. What the heck? Oh, yeah. Maximum cases. No, no, yes, no. It sounds. Oh, yeah. Let's see. Oh, yeah. We got it. Now, this is the second problem. Okay. So the only difference between the two versions in that is okay. That's the fuck. So a terminal in a row of n equal segment number 1 to n in order. These are two terminals, one above the other. Okay. You are given an array for of length n for all I1 to n. There should be a state wire from some point on segment I of top terminal to some point on segment I of bottom terminal. Okay. You can't select the endpoints of the segments. For example, the following picture shows, okay, like 1 is connected to 4, 1 is connected to 4. Okay, what is the maximum number? So maximum number we have to give, like if they are connected to same, so they are crossing, then it will give the maximum. Okay, so we have two platforms. Let's say this is the platform 1, this is the 2, and I will say like this is the first, this is the 2, 3, 4, and here same 1, 2, 3, 4, 5. Let's say it's say 5. Shit. Okay, yeah. Now let's say it having close to 2, 3. It second also linking to 3, third also linking to 3. Let's say 4 to 5, and this 2, 7. Let's say one more, 6 is considered to 4. Yeah, this is the example. So first of all, so like if you see, like the size of n is too less, like 10 to the power 3, so we can easily go for a brute force for n square, brute force in the sense of n square. Okay, so n square will easily work. So if n square work for, then I will go to each
like I will go to each of the station and take a look. If like what I'm trying to say is I'm go to like every station, like I will go to the first station and try to first is very first. I will go to like third station and have a look, and the behind stations like 1 and 2, if like any of these having value greater than this one, like if this is matching to like 1 and this matching to third, then there is a cross. So this is the first case. If n is smaller having a value larger, okay, like something like that. If I go to third, if I see like if any of the smaller values having a value greater than that, then there is a cross. I will sum up the answer. Okay. Secondly, now we have to deal with which all the points which joined at the same point. Okay. Now how to deal with the same points? Let's say uh, at this point three lines are coinciding like at this platform. So what is the maximum value I can get? Okay. So I will say like I can get something like that. Hmm. Hmm. So I can get 1 2 3, 1 2 and 3, 3 points I can get. Okay. So the problem is like here I can easily go and check. Okay. So like for this is the only one which are considering, which is only intersection. बट अब मैं लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो फिर मैं इसको मतलब ये तीन इंटरसेक्शन आएंगे, तीन में तो तीन इंटरसेक्शन आएंगे, तो इंटरसेक्शन कितने आएंगे? लाइक मैं चार के लिए देखूँ, फॉर द फोर मैक्सिमम इंटरसेक्शन 1 2 then I will say 3 and the 4, तो इंटरसेक्शन कितने आए इसके? 1 2 3 4 5 6, that will be n into n-1/2. तो चार के लिए कितने आ रहे हैं? 4 3 2 6, या दैट विल बी n इंटू n-1। जितने भी इस पॉइंट पे जितने अगर चार या पांच पे एक प्लेटफॉर्म पे कितने वो लाइन आ रही है दूसरे प्लेटफॉर्म से, वो उतने हो जाएंगे n इंटू n-1। तो फिर अब मैं चलो देखो कि चल मैं इनको छोड़ दूँ, अगर एक टाइम पे इनको छोड़ दूँ और वो दूसरा सार कैलकुलेट करूँ तो वो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा ऐसे। अब मुझे इनको कैलकुलेट करने हैं तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इनको कैलकुलेट इनके साथ नहीं करते, इनको अलग कैलकुलेट करते हैं। फिर मैं बस यही देखूंगा कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे गया तो इस प्लेटफॉर्म पे हर प्लेटफॉर्म पे जाकर देखा इस पे कितने इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पे कितने इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उनको जैसे कि इस पे 6 हो रहे हैं तो सबको n into n-1/2 ऐसे मैं करके आंसर ले लूँगा। बस मुझे यही करना है। तो ये दो स्टेप में सोल्व कर रहा हूँ मैं। एक में तो कर रहा हूँ जो इससे छोटे हैं और सेकंड स्टेप में कर रहा हूँ जो एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पे कितने हैं। क्योंकि मैं अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे करूँ, ठीक है, तो फिर मैं इस पे भी उतने, जैसे कि इस पे 1 2 3 वो क्रॉस हो रहे हैं, जैसे इस पे 1 2 एंड 3 क्रॉस हो रहे हैं, तो लाइक ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि मैं किन अब इनमें से किन पे ऐड करूँ, किस पे कौन सा इंटरसेक्शन आएगा, किस पे कौन सा इंटरसेक्शन आएगा। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं अलग से ही अरे बना लूँ, फिर उस पे देख लूँ प्लेटफॉर्म पे कितने वो इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा एक अच्छी अप्रोच रहेगी। ओके। तो दो लेवल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। So let's have a code. If you understand this problem, so you can also try the code. After that, you can watch out mine. Okay. So I am given here only n. Okay. I'm trying to improve my code speed and another a. For I to n c a of I. Then I will take another v, like how many स्टेशंस। सो एक स्टेशन पे कितनी वो हो रही हैं, वो कितनी इंटरसेक्ट आ रही हैं। तो देख रहा हूँ मैं कौन कौन सी लाइन कितनी लाइन आ रही है इस पे। तो स्टेशन पे ये एक लाइन आ रही होगी, तो इससे मुझे पता चल जाएगा पर स्टेशन पे कितनी लाइन आ रही है। ओके। जैसे कि मैं इसमें बताऊँ कि लाइक इसमें है 7 7, तो 7 पे 2 लाइन आ रही होंगी, तो ये 7 पे 2 लाइन है। ओके। सो
पहले तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर लॉन्ग लेने पड़े या नहीं? n into n minus 1 by 2 will be around, लॉन्ग लॉन्ग लेते फॉर द सेफ्टी, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी थिंक सो। तो फिर मैं वही लगाता हूँ। तो अगर मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप किया था इससे छोटे, तो जीरो से या इससे बड़े, जीरो से आई तक, इससे छोटे इफ, और एज जो है वो इससे बड़ा है, ये है, तो आंसर प्लस प्लस हो जाएगा। ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। ओके, ये हो गया पहले स्टेप मेरा कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे हर एक प्लेटफॉर्म पे जाना है, देखना है इस पे कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं, और आंसर को ऐड कर देना है। तो फिर मैं बस यही कर रहा हूँ। ये कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं, बी ऑफ आई इंटरसेक्शन हो रहे हैं इस पे, मैं लॉन्ग लॉन्ग जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बी ऑफ आई इंटू बी ऑफ आई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, औ इसका नाम स्टेशन दे रहा है, here we go। और मुझे सी आउट आंसर करना है। ओके, सो 6103। Oh, ah, fuck. This is the habit. Yeah, here we go. Yeah, seems good. Hope you understand this problem. This is a easy problem. Easy. Hmm. Cutting things. What happened?